Question number 26. Is it correct that level of savings को S से denote करते हैं, is the only determinant of investment demand? Answer, it's not only level of savings. सिर्फ level of savings नहीं. More the savings, more the investment. There are many other determinants of investment demand. They are rate of interest. देखो, it is cost of borrowing funds for investment. I will explain you. आपने 100 रुपीज बोरो किए और 4% इंटरेस्ट है. सो साल के एंड में कितना देना पड़ेगा? 104. सो 4% इज व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड. हायर द इंटरेस्ट, लोअर द डिमांड. अब इंटरेस्ट बढ़ के यदि 10% हो गया तो 100 रुपीज यदि बोरो किए तो साल के एंड में 110 देना पड़ेगा. सो हायर द इंटरेस्ट, lower the demand. Okay, so interest rate और demand की inverse relationship है. Interest and investment demand की inverse relationship है. Second, government policies. Investment will be more if government policies like taxation, exports are favorable. यदि government की policies favorable है तो country में investment ज़्यादा होगा. MPC, that is marginal efficiency of capital. That is, higher the marginal efficiency of capital, that is rate of return, more the investment demand. जितना ज़्यादा कमा के देगी capital उतना ज़्यादा demand होगा. Fourth, profit margin. If there is possibility of making high profit, investments are encouraged. यदि कोई ऐसा बिजनेस नजर आ रहा है जहां पे देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग हाई प्रॉफिट्स, देन इन्वेस्टमेंट्स आर एनकरेज. और यदि पॉसिबिलिटी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट्स विल बी डिस्करेज. सो इट इज नॉट ओनली द लेवल ऑफ सेविंग that determines of investment demand, it is also rate of interest, government policies, MPC marginal efficiency of capital, and profit margin.